Bismillahirrahmanirrahim. I am teacher Haya and today we are going to learn 3 new sounds. क्या आप सब मेरे साथ new sound learn करना चाहते हैं? Let's go. Let's learn 3 new sounds. K, J, V, K, 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 J, 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 V, V, V. Now tell me which one is K? This one? This one? Yes, this is K. Now tell me which one is V? This one? This one? Or this one? Yes, this is V. Okay, can you tell me which is J? This one? Yes, this one. J. Thank you. तो आपने 3 new sounds learn कर लिए. तो अब हम जो हैं वो देखेंगे कि इसमें से ख sound से कौन-कौन सी चीजें start होती हैं. Okay, let's see. Kettle, kettle, kettle. Kite, kite, kite. Kangaroo, kangaroo, kangaroo. Keys, keys, keys. तो अब आप सब मेरे साथ कुछ एक्टिविटीज करेंगे. Okay, let's do some activities. Okay, so first of all आप सब ख के अंदर ट्रेस करेंगे like this. Okay, we have to match the things starting with the sound k. Okay, does key start with k? Yes, we will match k with the key like this. Okay, so does kangaroo start with k? Yes, kangaroo starts with k. We will match kangaroo with k like this. Does horse start with k? No, horse does not start with k. We will not match it with k. Okay, does kettle start with k? Yes, kettle starts with k. We will match it with k like this. Did you enjoy the activity? अभी हमारे पास एक और activity है. First of all, we will trace inside k like this. And now we have to circle the things starting with k. Kettle starts with k? Yes, we will circle it. We will circle the kettle like this. Does nest start with k? No, nest does not start with k. We will not circle it. Does kite start with k? Yes,
Kite starts with K. We will circle it. Like this. Does ant start with K? No, ant does not start with K. We will not circle it. Does kangaroo start with K? Yes, kangaroo starts with K. We will circle it. Like this. So did you all enjoy it? Now we will do the book work. आप सबके पास ये इंग्लिश की बुक है ना? आप सबने इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 28 एंड 29 करना है और कैसे करना है ये आपको अभी टीचर बताएंगी. ओके? Okay, so first of all we will trace inside K like this. And then we will trace inside this K. Okay. Now kettle, kangaroo, key. And now we will color inside the kettle. So now we have to circle the things starting with K. Gorilla or kangaroo, which one starts with K? Yes, kangaroo starts with K. Now we have to trace inside this K. And then we will match it with this thing starting with K. Okay. Does hanger start with K? No. Key? Yes. Key starts with K. We will match it with key. Kite? Yes. Kite starts with K. Puppy? Does puppy start with K? No. Kettle? Does kettle start with K? Yes. Kangaroo. Yes, we will match it with K. Now we will trace inside K. आप सबने बिल्कुल इसी तरह से ट्रेस करना है जैसे टीचर कर रही हैं और मुझे आप सबका काम बिल्कुल ऐसा ही चाहिए जैसे टीचर ने केटल में कलर किया है बिल्कुल वैसे ही और अब जैसे टीचर की में कलर करने लगी हैं आपने भी बिल्कुल वैसा ही कलर करके टीचर को भेजना है. ओके? आप सबने बहुत अच्छा काम करना है जैसे क्लास में अच्छा करते थे. ओके? और ये काम करके आपने टीचर को उसकी पिक्चर भेजनी है. टीचर विल वेट फॉर यू. ओके, तो आप सबने बिल्कुल इसी तरह बहुत अच्छा सा काम करके टीचर को सेंड करना है. टीचर विल वेट फॉर योर वर्क. Allah Hafiz.